Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 13 of this series of public policy analysis. By this time, I'm sure you would have imagined or agreed that we are now more into the technical side of things, more into the practical side of things. In these lectures, what follows in this one and the other ones, we would probably be going through a few examples, a bit of graphical analysis, which would be this graphical analysis and examples of internal rate of returns and economic analysis of internal rate of returns and related things through a simple demand and supply analysis, through the analysis of a consumer and producer surplus. These things will be covered in the coming lectures. So hopefully you'd stay with me and try to understand this stuff, because now it's getting a bit technical. I'll try my best to get this point to you as clearly as possible, so that you may understand and don't have any problem in understanding this stuff. For those who already have a background in economics or maybe even finance, this stuff shouldn't be a lot of bother. So, but I've seen that a lot depends upon the practice. Once you tend to get into practical life, then you tend to forget a lot of things. That's what happened with me. Once I got into practical life and then got the opportunity to teach, I found that there was a gap in between in which I needed to refresh the concepts of the course and go through them again. So that's the way I'm going to go about it, is that I'm going to start with the basics and try to build from there, so that it's easy for those who don't understand economics and the related stuff which we would be doing right now, some calculations of internal rate of return and present values, and even for those who already have a background in this thing and have gone through this thing. It would be sort of a refresher course. So let's move on to some challenging things. First of all, the previous lecture, what we studied in it, we studied a practical example of policy formulation, application and refinement. It was the Madrasa reform program. The initiation, implementation and its poor result, what happened when it was designed, what happened when it was implemented, and ultimately we saw that at the end of the program, the proposed first phase, that was from 2003 to 2007, results were pretty bad. And this was despite the fact there were three government institutions, three government divisions, ministries that were tasked with evaluating this project, implementing this project, or looking after this project. So that pretty much tells about their capacity and their ability to handle those projects, which again was pretty poor given the results. So what happened again was that there was a policy redesign. Remember incrementalism, that instead of just doing away with the policy, you increment it and try to add some features to it, try to add good features to it and try to take out the bad features. So there was a policy redesign. It was sent to the planning and development division. There was a new survey was designed and a random sample was selected. Now this was important because I told you that when there are 8,000 madrasas, and this is just the official number, we don't know about the unofficial ones. It's not possible. Government doesn't necessarily have the resources and the time and the capacity to go about serving everyone, every 8,000 of those madrasas. So what happens is, the easy way out is that you take a random sample. For those who have already had statistics and economics, this should be easy. Random sample means that you just pick at random. It's not that you pick specific spot in a specific area. No, you just pick out something from an area and take a small sample as a representative of the whole population. Of course, it has its problems, but that belongs to statistics, not this course.
for our purposes, for the purposes of this kind of survey, a random sample would do. That would be good enough. That is fine. So after that, random sample was selected. It was applied at the start to 2 madrasas where the survey was carried out, and then it was further refined, the whole process, in lieu of the observations of those who carried out the survey. And after the whole survey was carried out, from the random sample selected, there were some conclusions and interpretations from the gathered data. This is the qualitative stuff, not the quantitative stuff. We didn't run any regressions or anything like that. We just, based on data and observation, made a few interpretations, and one of the interpretations, if you remember, was that quite a few of the madrasas were in good administrative shape compared to the public schools. They didn't need a lot of building material or building outlays. Most of them had the pakka buildings or buildings in good condition. They didn't need additional expenditures. So an interpretation was that when making a policy about madrasas, all these madrasas, you don't need to set aside huge amounts in terms of building. Not the capacity, but the physical buildings, which is in contrast to what happens in case of public schools, because a lot of times during my research, and with my colleagues, we found that most of the buildings are in very poor shape and they needed repairs. They needed some extra building space to be built. So in that case, we calculated that there was a huge amount required if we had to make those buildings, the public school buildings, come up to date or be in a good condition. I'm not saying a superb condition, but in a good condition. So in contrast, madrasas are already in good shape. They don't need that kind of outlay. So that was an example of how qualitative analysis is done. An interpretation is made based on data. So hopefully this would give you a clue that as a researcher what you need to do when you go into the field. So let's move on to the lecture. The IRR calculation, an example. So in the last few lectures, we went through some concepts like the internal rate of return, the present value, the cost-benefit ratio, net present worth. So these are all the concepts that technical concepts that are used in project designing and project outlays. These are used to calculate a certain amount of return, expenditures. Suffice to say that the project nowadays projects would be incomplete without these kind of calculations. These are a necessary part and parcel of project design, and naturally it would be used in project analysis too. The reason it's used in analysis, this kind of calculation, is that, as I have said before, as I've stated before, that conditions don't remain the same. When conditions, and we will see in the examples, the calculations that we do in this lecture or the coming lectures, that when the conditions don't remain the same, especially the economic one, the internal rate of return, it tends to change, and its change has implications for the project, for the application of the project, how to go about it, its feasibility, and that kind of stuff. So let's move ahead. Let's see an example, a practical one, and let's see what happens. In one of the previous lectures, we went through definitions of PV, IRR, cost-benefit ratios. Let us go through a stepwise calculation of the IRR, which involves calculation of other variables like the present value. So when you are calculating the internal rate of return, the IRR, you first need to calculate the present values for it. Without that, you wouldn't have an internal rate of return. Few basics. IRR is a useful yardstick for measuring the feasibility of investments, as I just said. Notice though that this kind of measure works best when future income and expenditure streams are well known.
You need to know what you are expecting. You need to know what you are expecting from a future investment. What kind of expenditure would you be making? You need to have a guess, an informed guess. And you need to have an informed guess about the income too, what you want to get out of it, what you are expecting, the kind of cash flow from it or the income from it. So these are the two things that you need to know when you intend to go about calculating IRR and present values. Alright, so for example, in the case of a bank account paying a specific fixed percentage on deposit, the income stream is well known. But in cases where future income goes through variations, calculating IRR is not that easy. For example, the returns from education and training do not follow a straightforward trajectory. अब देखें इसमें दो बातें आ गई IRR में. पहले इसकी ये है कि कैलकुलेशन में हमें उसके जो खर्चा होगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में उसका खर्चा होगा, वो भी हमें पता होना चाहिए. हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, और एज एन एनालिस्ट आप ये नहीं कह रहे कि जी कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल जो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कितने पैसे लगेंगे और कितनी हमारी इनकम होगी, कितनी आमदन होगी. नहीं, एक इन्फॉर्म गैस होना चाहिए बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस. जो आपने तारीख देखी है इसकी, इसमें देखा है कि नॉर्मली इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में किस किस्म का खर्चा होता है, तो उसके मुताबिक आपको जब ये चीज़ें IRR और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो ये चीज़ें एक इन्फॉर्म गेस होना चाहिए कि ओवर द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जितने साल में वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, अगर 5 साल का है तो उस 5 साल में खर्चा कितना होना है हर साल तकरीबन, और फिर उसमें आमदन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगी, कितनी होगी. फिर उसमें एक ये भी डिस्टिंक्शन आ जाती है कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जिसमें हमें पता होता है कि कितने पैसे आने हैं. मसलन बैंक अकाउंट है, खाता, बैंक में अगर आपका एक खाता है जिसपे एक शरह सूद मुनाफे के तौर पर मिलती है, तो उसमें अगर सपोज आपने 1000 रुपये रखवा लिया और उसमें 5% मुनाफा है, तो आपको पता है कि हर साल 50-50 रुपये उसमें मिलने हैं. लेकिन बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें ये पता नहीं होता कि इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या होगा, खर्चे को और आमदन में वो किस तरह होंगी, क्या वो स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी पे आएंगी या बिल्कुल फ्लैट जाएंगी, नहीं, उसमें नहीं पता होता. मैंने मिसाल इसमें दी एजुकेशन की. ये कोई पता नहीं होता किसी को भी. अभी आप भी एजुकेशन ही इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू यू आर गेटिंग योर सेल्फ एजुकेटेड, राइट, बट लेकिन इसमें आपको कोई ये अंदाज़ा नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट वुड इट हैव on your income in the future. What would that be? जिस तरह मुझे नहीं पता था, जिस तरह औरों को नहीं पता, जितने लोगों ने तालीम की है, अभी जो कर रहे हैं, तो इसमें भी फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होती है वो कैलकुलेट करना वो इतना आसान नहीं होती, वो फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि इनकम स्ट्रीम और एक्सपेंडिचर स्ट्रीम जो है दैट डजंट रिमेन द सेम, तो वो फ्लक्चुएशन होती रहती है. सो ये दो केसेस हैं, इनमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि किस किस्म के हैं. Now consider that an individual decides to put, अब हम एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं. Now consider that an individual decides to put ₹1000 in a bank account for 6 years that pays 5% interest rate yearly. सालाना मुनाफा 5%, 6 साल तक. Again, it's not necessary that the interest is yearly. Interest could be monthly. बहुत से बैंक्स अब ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के खाते आते हैं, कुछ सालाना मुनाफा देते हैं, कुछ जो होते हैं 3 महीने बाद देते हैं, सहमाही जिसे कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं, और 2 दफ़ा साल में भी देते हैं. तो इट डिपेंड्स कि कौन सा अकाउंट आपने सिलेक्ट किया. What this means is that for 5 years there will be annual interest payment, and in the 6th year we can withdraw the principal plus the interest. So this one should be easy to grasp. There is nothing very technical in it. That suppose in a bank account that pays you open a bank account that pays you 5% on your deposit, which is in this case we've considered it 1,000 rupees. So for the first 5 years we are getting just the amount of interest rate that is our profit on the money that we have deposited. In the 6th year, which is the last year, when we get the profit, we'll also get the principal back, which is 1,000 rupees. So the total payment would be 1,050 rupees in the 6th year. The calculation is as follows.
you can see the table. I've tried to make it as simple as possible, that the first year 50 rupees, second year 50 rupees, and that's the profit. The 5% profit on 1000 rupees, third year 50, 4 year 50, fifth year 50, sixth year it's principal plus the profit, that is 1000 rupees plus 50, which is 1050 rupees. So how do we calculate this return at 5%? That is, just multiply the 1000 by 5%. 5% is 5 by 100. So if you cancel out the zeros, you are left with 5 into multiplied by 10, which is 50. So that's our profit, which I've already stated in the table. This should be simple enough, hopefully. This is one form of investment. Now, when we are calculating IRR and present values and projects, IRR for projects, we are looking at opportunity costs, or we are looking at alternative investments. At a certain time in an economy, there are various options, investment options. You are not just left with one option. There are various ones. I've just mentioned that you can keep money in the bank account, or you can invest it in a project. This is the simplest one. But there may be a lot more. There may be investment opportunities in the construction sector. There may be investment opportunities in the services sector, in the industrial sector. Then you can bifurcate by industry. If you go to the subgroups of the industries, there are millions of possibilities. You have to, the basic principle over here, the basic grounds for going through this kind of stuff is that you have to compare the investment opportunities and come up with the best one. Over here what we are doing is that I've just considered one investment opportunities. Now I'm going to consider an alternative one. These two are present at a time, and we have to decide in between them which one is the best. And we are using the present values and IRR to decide that. So now consider any alternative investment of buying a machine that pays rupees 200 for 6 years on an investment of rupees 1000. Difference from the first investment, there is no lump sum amount waiting at the end, meaning principal plus profit. So there is a difference over here in this investment. This is different from the other one because you are just buying a machine and you bought it for a certain time, suppose 6 years. You've calculated that for the 6 years that you are going to have this machine, this is going to pay you 200 rupees yearly. So the income stream from buying a machine and operating a machine is 200 rupees yearly compared to 50 rupees of the bank account. But the difference over here is that we won't be getting, if you have bought a machine, you won't be getting the principal back, the 1000 rupees that you've already spent. No, machines are by that time going by the principle of depreciation, it won't give you much. In fact, for this example, we considered that it would give you nothing. Even if you try to sell it, it won't sell. So you made an expenditure, you won't be getting anything back. The only thing that you are getting in those 6 years with this thing is that you are getting an income stream that is 200 rupees yearly from this machine. So again, the table in which I have sorted out the years, stated the years and then the return on everywhere, which is 200 rupees. So now make in comparison. The comparative returns are tabulated as follows. You have the years 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the bank's case, you have the returns as for 6 years as 300 rupees. The profits that is going to accrue to you, that would be 300 rupees. But in the case of machines, that would be only 200 rupees. Now, don't get confused. I'm going to explain what is happening over here. In the case of first one, the bank, I haven't included the principal amount. We are just considering the profit, the income stream. Remember, we are just considering the income stream. We are not talking about principals and that kind of thing for the moment. This is just a comparative analysis of the profits. So but in the next one, the machine, it's only 200. Why 200? Because if you add up all that,
you have to take out the 1000 too, which you initially invested. Remember I said that you won't be getting anything back. Machine won't sell, it would be obsolete. So you have made an expenditure of 1000. In bank's case, you would be getting back the principal. So you don't need to take out the principal amount as an expenditure from the income. But in this case, you need to take out in the case of machine, you need to take out the 1000 from the total profit because it's an expenditure accrued, and it gives you the total leftover profit is 200. So if you look at this, wouldn't you agree that 300 is better than 200 and we should go for the bank? Not so simple, as we'd see that it might not be the case when we go about the present value stuff and then the internal rate of return. It's not about making guesses just on nominal numbers कि 300 रुपये यहाँ पे हमें जो मुनाफा नज़र आ रहा है और दूसरा मशीन से जो मुनाफा नज़र आ रहा है वो 200 रुपये है, तो इसका मतलब है कि बैंक वाला ऑप्शन अच्छा है और मशीन वाला अच्छा नहीं है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. अभी उसमें जब हम फिर प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, तो फिर हमें पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा मुनाफे वाला है और कौन सा ऑप्शन जो है वो कम मुनाफे वाला है, कम फीसिबल है. इसमें अगेन ये बात मैं आपको दोबारा क्लियर करता चलूँ कि पहले जो बैंक वाली जो स्टेटमेंट है मुनाफे की, इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ मुनाफा ऐड किया हुआ है. उसमें से मैंने वो 1000 रुपये नहीं निकाले जो हमने खाते में रखवाए थे. वजह यह है कि वो 1000 रुपये हमें आखिर में वापस मिल रहे हैं, इसीलिए उसको मुनाफे से हमने मनफी नहीं किया, उसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया. मशीन के केस में चूंकि मैंने ये कहा कि मशीन दोबारा 6 साल बाद उसकी कदर कीमत ख़त्म होगी और वो बिकेगी भी नहीं, अगर बिकेगी भी तो बहुत कम कीमत पे बिकेगी, तो इसलिए उस में से जितना भी ये मुनाफा हो रहा है उसमें से हमने वो 1000 रुपये निकाल लिया, क्योंकि वो खर्चा हो गया जो हमें वापस नहीं मिल रहा. तो वो आखिर में उसका रिजल्ट यही होगा कि ये तकरीबन 1200 जो बनेंगे उसमें से 1000 रुपये निकाले तो 200 रुपये बच जाएंगे. उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. The same point, you may be wondering why the total income in case of the bank is 300 while it's 200 in the case of alternative investment. Note here that I am only talking about returns on income on two different investments. The rupees 1000 of bank investment is the principal amount, while the rupees 1000 of alternative investment buying machine is purely an expenditure which wouldn't be retrieved, not in full at least. The same thing that I just said. So it would seem a straightforward decision, right? Bank account income is more than income from machine if you total that, as we just saw. Therefore, it seems a more profitable investment. But to arrive at an answer, we need to calculate the present values of both income streams. Now, if you are confused about the meanings of these terms, discounting, present values, internal rate of return, you need to go back to the lecture in which we discussed it. I tried to make it as clear as possible. So you need to clarify this concept before we go over into this into these calculations, because these are a bit technical calculations. You need to be clear about these concepts. So go back in case you haven't understood those concepts. Don't be afraid to play those videos again and again until you understand that concept. You can get help from anywhere you want, net or your book, textbook. It also gives you a definition, but I tried to clarify it, modify it so that I can make it as simple as possible. So be my guest. If you can take it out from a lecture, your understanding, it's good enough. If you can't, you can use other sources too. So hopefully it wouldn't be a problem. By now you've understood it. But anyway, I'm not going to go through definitions again. No, I'm just going straight to the calculations now. So let's calculate the present values. The difference from above calculation here is that we will consider the initial rupees 1000 as an expenditure. Remember, in the calculations like cost and benefit ratio, we consider both income and expenditure adjusted for the present value. Now you are going ahead and calculating certain ratios, certain percentages, technical percentages. So if you remember from that lecture when we discussed all these things, when you are discussing these kind of the cost benefit ratios, for example net present worth, you need both the expenditures and the income.
adjusted by the present value. So once you have those, then then we can go ahead and make calculations and arrive at conclusions. The discounted values are as follows. Again, go back to the formula for discount, what it is. It's the income by 1 plus discount rate raised to the power of the year. That was, I believe, A, which I stated in the lecture. So anyway, if you discounted these income streams and discount the expenditures, discount the principal amount toward the expenditure, which is rupees 1000. This is what you'd be getting over here, as I've stated in the table. So it's all the 6 years. Banks total 300. But if you calculate the present value, which is if you apply the formula of the present value for every year, you'd be getting the present value of that profit that you earn. So if you calculate the present value of every year, which I have and stated it in the table corresponding to it, for example, in the 4th year, the present value of the income of 50 rupees from the bank account, that the present value would be 41.14. In the 5th year, it would be 39, and in the 6th year, when we'd be getting our principal back too, principal plus the profit, that is 1050. In the 6th year, its value would be 758 rupees, the value of 1050 rupees. So you could see a gradual decline as far as the present value of an income stream is concerned. Even if you consider the last one, there is a decline. 1050 rupees in present value, it comes to 758 rupees. The total, if you take it out from 1000 rupees, remember that is the initial expenditure that we made. The 1000 rupees that we kept in the bank account, in this case, in the case of present values, that would be also considered expenditures. So from the income, if we add up all these present value numbers and take it out from the expenditures from the 1000, that what we are left with is almost 0.01. Contrast that with the machine income stream, which looked smaller than the bank one in nominal terms, and it is. But once you take out the present values, for the first year it's 190.48, for the second it's 181.40. You go on, and by last year it comes down to 200 rupees. By the 6th year, it means it's in actual, if you adjust it for present values, it's only 149.24. So again, how do you arrive at the number 15.14? Well, take it out from 1000 rupees, that was the expenditure on the machine. Add up all the values of the years, 1, 2, 3, 4, 5, 6, add up all the values, the present values of these years, and take it out from 1000 rupees. And this is what you're left with, 15.14. Which is more than what we are left with in terms of present value of the bank's investment option. Two questions here. Why 5% was chosen as discount rate for present value calculations, and how did we get the end total of present value calculations? Why 5%? It's the rate of investment at bank account, and represents the opportunity cost of investing in machine. Again, go back to your lecture if you don't understand the concept of opportunity cost. It's the alternative investment, the next best option. So that is why we picked that rate. And in any case, as we'll go further, you see that the interest rate that is picked for the valuations or the present value calculations or for discounting, that a lot of the times it happens, in fact most of the time it is the option of the opportunity cost, the rate of the opportunity cost, the next best option that we forego. In valuation of projects or analysis of a proposed public policy, the opportunity cost of a capital is needed for present value calculations.
In this case, while comparing two investments, bank and machine, the opportunity cost of capital is the option we forego, the bank option, and thus it is 5% or it's 5%. Now, at this moment, I won't say that we've foregone the conclusion, foregone the bank investment completely, but we are using it under the assumption that this is an alternative investment to the machine. We calculated the present values on it. We are assuming that it's a good investment. We have calculated the present values, but to arrive at a final conclusion, you need to take out, in fact, calculate the internal rate of return that will give you the rate. It will signify what rate it would be, the final rate that we need to use as a discount rate. For the moment, we are just assuming, we are just making a guess, since banks already had offered a rate for profit. So why not use it to calculate present values, because we are comparing those two investments. Let's compare it at what the bank was offering, 5%. So let's compare the other investment, the machines, too. This is the thinking. So this is pretty much why this is the opportunity cost. We consider it an assumed opportunity cost at this moment. Why 5%? Then the second one, total after present value calculations. The discounted present value total, the total at the end of PV discounted calculation is arrived at after subtracting it from total expenditure. I've already explained it. In deciding about investment decision, discounted numbers of income in lieu of expenditures made is what really counts. So over here, just don't look at the nominal numbers. जो नंबर आपको दिए जाते हैं कि जी इस खाते पे आपको इतने पैसे मिल रहे हैं या इस मशीन पे इतने पैसे आ रहे हैं, ये नॉमिनल नंबर्स होते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू एडजस्टेड नंबर नहीं होते. जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि सिर्फ जो नंबर हमारे सामने लाए जा रहे हैं, 1000 रुपये हो गए, 1200 हो गए, 1500 हो गए, लाख रुपया आ गया, 1.5 लाख रुपया हो गया, 5 लाख, 10 लाख, ऊपर जितना जाते हैं आप जाते हैं, जितनी अमाउंट है, लेकिन सिर्फ उन नंबर्स को नहीं देखना. जब हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं और उसमें पॉलिसी डिज़ाइन हो रही होती है, उसमें ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश हो रही होती है कि क्या यार ये इन्वेस्टमेंट ठीक है, नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उसका किस तरह हम अंदाज़ा लगाते हैं, क्या कैलकुलेशन करते हैं. तो उसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यूज चाहिए होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होती है. उसमें सिर्फ ये नहीं कि जो लिखा हुआ ऊपर के इसमें इतना खर्चा हो रहा है, इसमें इतनी आमदन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे ख्याल में इतनी आमदन होगी, उस पर नहीं बेस करना चाहिए डिसीजन. ये बेस होगा प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू पे और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, जो कि अभी हम कैलकुलेट करेंगे. इन डिसाइड जो कि यही बात है कि इन डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दीज आर द थिंग्स दैट काउंट. So strictly speaking, in terms of present value calculation, the machine represents a better payoff in the end as an investment option. Remember though that these are mostly used for large scale projects and investment. Outside of the investment world or the world of projects, it is not present value or like calculations that matter, but rather the preferences of individuals. A person might be perfectly happy with receiving rupees 50 as income for 5 years from the bank account option, and then collect rupees 1050 at the end without giving any thought to present value or internal rate of return. जहाँ तक बात आती है बड़े projects की, we are just strictly speaking about large scale projects, कि हमने कहा कि जी ये large scale projects हैं, इनके बारे में हमने बात करनी है, इनके हमने वो ऑप्शन देखना है कि कौन सा अच्छा है, शुड बी गो हेड विद इट और शुड बी नॉट. बट इन द रियल वर्ल्ड एवरी पर्सन हैज देयर ओन सेट ऑफ प्रेफरेंसेस. मेरी प्रेफरेंसेस जो होंगी वो अलग हैं, आप जो स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर्स देख रहे हैं, आप सबकी प्रेफरेंसेस अलग हैं. जो आप चाहते हैं कि जिस तरह एक चीज़ हो, जिस तरह एक इन्वेस्टमेंट हो, वो एक अलग आपका डिसीजन है. इट्स नॉट अ कंबाइंड डिसीजन. मेरा अपना एक डिसीजन होगा, मेरी अपनी एक प्रेफरेंस होगी कि मेरे ख्याल में ये ठीक है, ये नहीं है. नाउ यू सीन इन दीज कैलकुलेशंस दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मशीन्स is much more than the present value of income from
or investment from the bank account. But as an individual, it depends upon your preferences. You might be perfectly happy in putting away that 1,000 rupees in the bank account as a saving and earning the 50 rupees yearly, and in the end, at the end of the 6th year, getting that 1,000 rupees back plus the 50 rupees back, that would all count as your saving. But there might be circumstances that you might prefer the 200 rupees coming over because it's a difference of 150 rupees in income stream per year. You might be perfectly happy to get 200 rupees every year instead of rupees 50 and not get any money at the end. So it depends upon your preferences. हो सकता है आपको हर साल 50 रुपए जो मिल रहे हैं आप उस पर खुश हो, क्योंकि आखिर में आपको पता है कि आपको 1050 रुपए मिलना है आखिरी साल, जो कि एक किस्म की बचत होगी. लेकिन हो सकता है कि आपको ये नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको फौरी मुनाफा चाहिए, आपको फौरी पैसों की ज़रूरत है. आप इस किस्म के इन्वेस्टर है जो कि लिक्विडिटी को देखता है कि मेरे पास ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो कि लिक्विड है. ज़्यादा लिक्विड मतलब यह है कि वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है और ज़्यादा कैश देती है इस सेंस में. तो फिर प्रेफरेंस जो है आपकी फिर किस इन्वेस्टमेंट में, इस केस में फिर ज़ाहिर है उस इन्वेस्टमेंट में होगी जो कि हर साल 200 रुपए दे रहे हैं बजाय 50 रुपए के. दैट इज़ द मशीन इन्वेस्टमेंट. सो ये डिपेंड करता है कि कौन क्या चाहता है, अपनी प्रेफरेंसेस क्या है. ये रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ प्रोजेक्ट्स हो गए, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर में एनालिसिस होगी इस तरह की, तो वो उसमें तो ये कैलकुलेशंस आती हैं. You have to do these calculations. But on a micro level, on an individual level, on a household level, things are different. It depends upon preferences, not exactly on present value or income, internal rate of return. In fact, बहुत से households को ये चीज़ें पता ही नहीं होती. ये सिर्फ professionals को पता होती हैं. Internal rate of return, stock markets में जो लोग invest कर रहे होते हैं या institutional investors होते हैं जो कि बड़ी बड़ी firms में invest करते हैं, ये उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन होती है. फाइनेंशियल बुकलेट्स में होती हैं जो उनके वो हर साल फाइनेंशियल बुकलेट्स छपती है इन्वेस्टर की इंफॉर्मेशन के लिए. ये चीज़ें उनमें होती हैं. फॉर हाउस होल्ड, फॉर दोज हु, फॉर पर्सन लाइक मी, फॉर पर्सन लाइक यू, कंसिडरिंग दैट वी आर जस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स, हमारे लिए ये चीज़ इतनी अहमियत नहीं रखती है. हमारे लिए ये चीज़ अहमियत रखती है जो हमारे जहन में है. वो ये इस तरह की चीज़ होती है कि the way to go about it is कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ. क्या मैं ये चाहता हूँ कि 6 साल बाद, चलो 5 साल बाद मुझे पैसे मिल जाए, एक ही दफ़ा मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए. मिसाल के तौर पे स्टेट लाइफ वगैरह की जो ऑप्शन है, इंश्योरेंस की जो ऑप्शन है, वो यही करते हैं कि ख़ास मुद्दत तक 5 साल 10 साल की पॉलिसी होगी, 15 साल की, 20 साल की होगी, तो वो आप हर साल पैसे जमा करवाते रहते हैं, उस पर मुनाफा बनता रहता है. 10 साल के आखिर में, 15 साल के आखिर में आप मुनाफे समेत वो जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाते रहे वो सारी ले लेते हैं, तो वो आपकी बचत होगी. आई एम डूइंग दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. स्टेट लाइफ डज दैट ओवर हियर. आई बॉट अ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एंड इट you give a certain amount, I give a certain amount every year, and the profit accrues on it. So in the end, whenever I take it out, after 10 years, after 15 years, that would depend upon my preference. When I take it out, I am going to get all the principal amount that I have been depositing every year, plus the rate of profit on it. Whatever profit has been made on it yearly, I am going to get that all. So it would be a saving, and of course I am expecting that it would be a huge saving. Everybody expects that, but the basic issue, the basic point what I am trying to get at you is that differentiate between an individual and a household, and what a government does in terms of implementing a public policy and a project. Next, what the calculations using present value have done is that it has told us the option that is better in terms of a discounted future income stream. प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन में हमें ये बता दिया कि डिस्काउंट्स जब करेंगे तो उसमें कौन सी वैल्यू जो आती है वो अच्छी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, जो कि मशीन्स की थी. नाउ दैट वी हैव चोजन एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट एन IRR फॉर दैट इन्वेस्टमेंट. Put simply, IRR is the discount rate
that makes the present value of a machine's income stream total to zero. Why we take it to zero? क्यों उसमें zero होनी चाहिए? दोबारा जाए लेक्चर पे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, नोट्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है. You need to get a hold of these things. आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए. For any question about why zero, refer to the lecture about discounting and IRR. We already know about the 5% number, which gives us rupees 15.14 as a return. We want to know the number that makes this return equal to zero. Again, why would we want this return equal to zero? Go back to the lecture. क्यों हम करना चाहते हैं? And try to make sense of it. The logical step is to try a higher percentage, that is the 6%. However, if we make the discount calculations as we did above, we will get a number that less than zero, which is not acceptable. It should be a positive number. Logically, this implies that the rate that we are looking for is somewhere between these two numbers. अच्छा, अब एक logical step, एक सिंपल सी मंतक है, वो ये है कि अगर हम एक ऐसा नंबर देख रहे हैं, एक ऐसी परसेंटेज देख रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम यही करते हैं कि एक खास वो नंबर देखते हैं जिससे इनकम स्ट्रीम जो होगी, अब जिस तरह 15.14 थी मशीन के केस में, वो हमने वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखना है कि जिससे वो 15.14 जो है वो तकरीबन सिफर के करीब चला जाता है. क्यों चला जाता है, क्या वजह, इसकी मंतक क्या है, ये आपको पहले के लेक्चर से वो देखना पड़ेगा और उससे ट्राई टू में उससे ये चीज़ जो है समझनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है. लेकिन अभी देखिए 5% रेट पे हमने जब ये सारा कैलकुलेट किया था, इस पे अगर 15.14 आ रहा है, तो जब इसको कम करना है तो इट इज़ लॉजिकल कि आप एक ज़्यादा इससे थोड़ा सा शरई सूद ज़रा ज़्यादा कर लें, इंटरेस्ट रेट उससे ज़रा ज़्यादा कर लें. तो लेट अस बिगिन, वी बिगेन विद 6%. इट इज़ लॉजिकल स्टेप कि जी 5% की बजाय चलें 6% करके देखते हैं, क्या ये सिफर के करीब आता है? नहीं, सिफर के करीब नहीं आता, बल्कि ये सिफर से नीचे चला जाता है, नेगेटिव नंबर हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए. हम सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर देख रहे हैं, सिफर या सिफर के करीब करीब, नेगेटिव उससे नीचे ना हो, हम वो देख रहे हैं. 6% जब हम ट्राई करते हैं तो वो जो ये नंबर है, जो रिटर्न्स हैं, वो सिफर से नीचे चली जाती हैं, इसलिए ये 6% नहीं हो सकता. तो फिर क्या करते हैं आगे, हम ये करते हैं कि 6% से ज़रा कम करके 5.8% कर दिया, 5.7%, 5.6%, 5.5%, इस तरह करते रहते हैं जब तक कि ये नंबर जो है, प्रेजेंट वैल्यू का जो नंबर है, ये 100 के करीब नहीं आ जाता. तो देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो कि इसमें आता है. Try making the calculation at 5.5% and likewise in the end the rate at which discounted returns reach zero. जिस तरह के हमने पहले ही प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस की थी, उसी तरह इस वक्त भी यही करेंगे. इसमें भी उसी तरह प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशंस करेंगे और वेरी नियर जीरो. टर्न्स आउट टू बी 5.47%. 5.47% पे जाके ये बिल्कुल सिफर के करीब पहुंच जाता है, ये नंबर जो होता है इनकम का. तो ये 5.4% जो होगा, this is our IRR, ये internal rate of return है. Again notice that 5.4% IRR is higher than 5% of the bank account return, which makes the comparative return on machine more attractive. अभी दोबारा देख लें, जब हमने एक internal rate of return भी निकाली तो वो 5.44% आई, जिस पे ये इनकम जो होती है, ये आमदन जो होती है, ये तकरीबन सिफर पे पहुंच गई, उसके नज़दीक पहुंच गई. तो 5.4% जो है वो बैंक जो आपको ऑफर कर रहा है 5%, वो उससे ज़्यादा है. तो दैट मेक्स इट अ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है. इसमें हमें ज़रा ज़्यादा आमदन की उम्मीद नज़र आ रही है, इसका मतलब यही है. तो सो वी वेंट थ्रू ऑल दिस प्रोसेस. वी सॉ कि हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली कि दो हमें ऑप्शंस हैं. एक है कि इन्वेस्टमेंट बैंक का, और रियल वर्ल्ड में भी व्हेन यू डू द रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन, व्हिच आई होप यू विल एट सम टाइम इन योर practical life, that you would be looking at different investment options, not just one or two. There would be multiple ones, so you have to decide between the best one. यहाँ पे आपको दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थी. एक सादा करके एग्जांपल मैंने आपको बताई कि दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं.
एक है कि बैंक में पैसे रखवाए जाए और उस पे उससे इनकम कमाई जाए, उससे आमदन ली जाए, और दूसरा मशीन खरीदी जाए और उससे सालाना आमदन ली जाए। दोनों का जो अरसा है वो 6 साल का है। तो उसमें कौन सी अच्छी है? First we look at just the nominal numbers. We just added up the income streams, and one turned out to be 200, the other turned out to be 300, the bank one. But those are nominal numbers. It would be, as I mentioned, it would be a mistake to just focus on that. So उसके बाद हमने क्या किया कि एक वाकई एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छी है या नहीं है, तो उसके लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट की, और फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट की और उसमें जो अच्छा ऑप्शन आया उसका हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला और देखा कि वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आ रहा है वो दूसरी जो ऑप्शन थी हमारे पास बैंक अकाउंट की उसके मुकाबले में बेहतर है या नहीं है। दोनों केसेस में प्रेजेंट वैल्यू भी जब हमने निकाली उसमें भी वो उससे बड़ा था नंबर, बैंक का जो प्रेजेंट वैल्यू का नंबर था। इस केस में भी जब हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी निकाली तो जो हमें शरह सूद मिल रही है वो उसके मुकाबले में ज़्यादा है। मतलब ये है कि मुनाफा इन्वेस्टमेंट पे हमें उससे ज़्यादा मिलेगा मुकाबलतन, comparatively there would be more profit. So that is how we come to a conclusion about the internal rate of return of a certain project. In this case it's 5.4%, which we will use as IRR, and then in all the project during its application, during its designing, during other phases, and see and in the coming lectures, in the coming examples you are going to see a demonstration of you are going to see the basics, or at least we are going to study the theory in the coming lectures of why the internal rate of return changes and what its implication is for investment. So stay with it, stay with me. We'll be going through a lot of stuff. So now that we've calculated the present value and we've calculated the internal rate of return, I gave you a simple example of that. It's time to look at some of the applications of the internal rate of return, the real world applications. The first one is the bond sale at a discount. For those of you with an economics background, even for those of you who don't have a background in economics and finance, this should be easy. You must have heard about a bond. ये तो तकरीबन हर एक ने बॉन्ड के बारे में सुना होगा कि हुकूमत ने बॉन्ड का इजरा कर दिया, बॉन्ड्स इतने के बिक गए, बॉन्ड्स पे जो है शरह सूद इतनी है, शरह मुनाफा जिसे कहते हैं इतना है. You must all have heard about it. Just recently, about 2 to 3 months ago, the government issued euro bonds, government of Pakistan, they issued euro bonds at an extremely high rate, around 6%. When one has to analyze that policy, in a technical sense, then again you have to calculate the internal rate of return to see whether it was a good investment or not. As an investor, no, I'm not saying as a government official, as an investor, as a government official, if you are looking at the policy, you would be calculating internal rate of returns because you know that the investors to whom you are offering the bonds as part of the government would also be looking at those internal rate of returns and making the calculation. So it's imperative that you do that and offer it at a rate that makes it attractive for them. हुकूमत तो बॉन्ड्स का इजरा कर देती है, ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है ना जी, इन्वेस्टर भी ये चीज़ें इसमें देख रहा होता है, जो ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो काफ़ी अरसे से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो इन चीज़ों में माहिर है, वो इन चीज़ों का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं. तो आपको एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मुझे या आप, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग दीज कैलकुलेशंस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू? आपके लिए क्यों ज़रूरी है? आपने तो सिर्फ बॉन्ड का इजरा करना है ना. आपके लिए क्यों ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जाने? वो आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को बेचना है, बॉन्ड्स को बेचना है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्टर क्या चीज़ देखेगा इसमें और क्या चीज़ उसको खींच के लाएगी इसकी तरफ, और वो होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्वेस्टर कैलकुलेट करता है. सो इन मेकिंग इन इश्यूज रिलेटेड टू बॉन्ड सेल्स,
It's imperative. It's almost necessary. I don't know if it is completely necessary and we can do it without it. We can do the bond sales without it. I think we can, but from a technical point of view, you need to carry out these calculations. So let's go ahead with it. First of all, what's a bond? It's basically a debt instrument or a way of acquiring debt. Through bond sales, what the issuer does is that it is promising to pay the principal amount plus a certain percentage in profit monthly, biannually or annually. These can be issued by a government or a corporation or a private entity. अच्छा ये अभी हमने बात की बॉन्ड्स की कि ये हुकूमत यहाँ पे तो सिर्फ हुकूमतें ही इजरा करती हैं, हमने ज़्यादातर यही सुना है। जो बाहर ममालिक है जो इक्तिसादी तौर पर जिन्हें हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज या तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे जो कॉरपोरेशंस होती हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी बॉन्ड का इजरा करती हैं, वो भी बॉन्ड्स बेचती हैं। बॉन्ड बेसिकली होता क्या है? बॉन्ड ये होता है वी आर टेकिंग ऑन डेट, ये कर्जा लेने के लिए, कर्जा एक्वायर करने के लिए ये एक तरीका कार है, इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं। इट्स अ तरीका कार, इट्स अ वे ऑफ एक्वायरिंग डेट। क्या इसकी अट्रैक्टिवनेस होती है? अट्रैक्टिवनेस इसकी ये होती है कि जिस तरह वो बैंक अकाउंट वाला अभी हमने एग्जांपल देखी थी कि ये ले लें आप बॉन्ड, इतने रुपए का आप ले लें, हम आपको ऑफर कर रहे हैं और इस पे सालाना या माहाना या जो भी वो डिसाइड करे गवर्नमेंट, हम आपको इतना इतना मुनाफा देंगे। और जब वो टाइम गुजर जाएगा, जितने साल का वो बॉन्ड है, मसलन हमने 5 साल का बॉन्ड का इजरा किया, तो 5 साल के बाद जो है वो बॉन्ड के जो 5वें साल मुनाफा बनता है, उसके साथ साथ वो जितने का हमने बॉन्ड खरीदा था वो पैसे भी वापस हो जाएंगे। तो इट्स जस्ट लाइक द बैंक अकाउंट एग्जाम्पल दैट वी स्टडीड, bond is something pretty much like that. So the only difference being that it was a bank could be a private bank, a government bank, but bonds are usually, and in these parts of the world, bonds are usually issued by the government. Let us go to the example. This example is of a common type of bond known as a discounted bond, which sells at a discount. Let me clarify it a bit. Let me be as simple as possible. डिस्काउंट जो लगा होता है बाजारों में, किसी दुकान पे कि जी हमने डिस्काउंट लगाया, डिस्काउंट क्या होता है कि जो कीमत जिस पे वो बेच रहे थे उससे थोड़ी सी कम करके बेच रहे हैं, दैट इज अ डिस्काउंट। बॉन्ड्स में भी यही डिस्काउंट है कि जी पहले जो 1000 रुपए उसकी वैल्यू है बॉन्ड की, और हम 1000 रुपए नहीं बेच रहे हैं, हम 900 पे बेच रहे हैं। सो इधर ऑफर हो रहा है डिस्काउंट 100 रुपए का, दैट इज अ डिस्काउंटेड बॉन्ड। व्हाई डू दे डू दैट? वील जस्ट सी. The example is of a common type of bond known as a discounted bond. Suppose there is this offer of rupees 1000 bond with a return of 10% for 5 years. 5 साल का वक्फा है बॉन्ड का, 5 साल का बॉन्ड है और उस पर 10% जो है मुनाफा है, शरह मुनाफा सालाना, सेलिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 900। अब वो 1000 रुपए का बॉन्ड है लेकिन 1000 रुपए का खरीदना नहीं पड़ेगा हमें, वो उस डिस्काउंट पे दे रहे हैं, कीमत कम करके दे रहे हैं, 900 रुपए पे दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि एकदम इमीडिएटली वो 100 रुपए का उसको बचत हो रही है उसकी और 100 रुपए का मुनाफा वो रियलाइज कर रहा है। Is it a good investment? The answer to answer this we need to come up with the present values and internal rate of return for comparison to other investments. Let's first make a table that shows the future income streams at the discounted values as we did before. जिस तरह के हमने पहले किया था, एक टेबल बनाए, सालाना उसमें देखेंगे एक साल हर साल में कितने पैसे उसके मिल रहे हैं, और अगर जब उनको डिस्काउंट किया जाएगा तो फिर उसमें से कितने पैसे बचेंगे हमारे ना। अगर आप देखें टेबल को, इट्स एज सिंपल कि जिस तरह हमने पहले वो कैलकुलेशंस की थी कि हर साल की जो इनकम है जो शरह मुनाफा के हिसाब से है, 1000 रुपए पे अगर 10% का शरह मुनाफा है तो वो मतलब ये है कि हर साल आपको 100 रुपए का मुनाफा होगा। सो देन वी डिस्काउंटेड दोज दैट इनकम स्ट्रीम for every year, just like we did in the case of bank account, that in the last year we do the discounting of the initial investment plus the profit, which would make it 1100 rupees in this case.
So we take out the present, so we use the present value and calculate it by using that formula. What we get over here is again it's going down every year. So it started off at 90.91 as a discounted value for the first year, and by the fourth year, when we are not considering the principal, the original amount bought, it comes to 68.30. So it's gradually declining. And the last year, when the total principal plus the profit is 1100 rupees, we discounted it, that means it's 683 rupees. The total of all these comes to 100 rupees. And again, notice again that the total of the present value is gained after subtracting the original amount of rupees 900. अब 900 रुपए जो आपने शुरू में दिए थे बॉन्ड खरीदने के लिए एज एन इन्वेस्टर, वो देखें इसमें फेस वैल्यू नहीं कंसिडर की जा रही बॉन्ड की कि वो 1000 रुपए का बॉन्ड है, नहीं, ये नहीं कंसिडर किया जा रहा एज एन इन्वेस्टर. मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैंने बॉन्ड कितने का खरीदा था, और वो मैंने खरीदा था 900 रुपए का, और उसी 900 रुपए को हम कंसिडर करेंगे आखिर में जब हम वो एक रेशोज निकाल रहे होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, नेट प्रेजेंट वर्थ वगैरह निकाल रहे होंगे, वही हम कंसिडर करेंगे जो ओरिजिनल हमारा खर्चा हुआ था. द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम स्ट्रीम टर्न्स आउट टू बी एग्जैक्टली द सेम एज द डिस्काउंटेड एज द डिस्काउंट. 100 रुपए जो यानी आप देखें कि जो ओरिजिनल उन्होंने डिस्काउंट दिया था 100 रुपए का, वो बिल्कुल वही है जो कि प्रेजेंट वैल्यू निकाली डिस्काउंटेड इनकम स्ट्रीम्स की, तो दोनों बराबर हैं. सो द कंपनीज ऑफर द डिस्काउंट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट बॉन्ड इन्वेस्टर्स. Without a discount, when the investor figures out that the present value of future income stream is equal to price today, they perhaps won't find any incentive to buy a bond. अब this is a possibility कि देखें जब यहाँ पे इन्वेस्टर ये देखता है कि अगर 1000 रुपए का मुझे बॉन्ड ऑफर हो रहा है, उस पर इतनी सर्टेन परसेंटेजेस मिल रही हैं मुझे, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है डिस्काउंटेड वैल्यू वो तकरीबन उतनी ही है जो कि मुझे जितना वो डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा है, क्या कोई फ़ायदा है मुझे ख़रीदने का? तो उसमें उसको इंसेंटिव नहीं नज़र आएगा अगर वो दोनों इक्वल हैं. डिस्काउंटेड वैल्यू और डिस्काउंट अगर वो एक ही जितने आ रहे हैं तो मे भी उसको कोई उसमें फ़ायदा ना नज़र आए. इसीलिए शुरू से ही एक डिस्काउंट रखा होता है जस्ट टू अट्रैक्ट दम कि जी ये आपको देखे डिस्काउंट मिल रहा है, और ये जो है ये आपके एक इंसेंटिव है कि आके आप उस डिस्काउंट पे बॉन्ड खरीदें. we'll discuss it further. We'll discuss this thing further again. This might be confusing for you, but I'm trying to make it as simple as possible. Just take it for the moment, just take it as an incentive, the discount. Just take it as an incentive for luring the investors for buying a bond. This is a bit different from project calculations. Because the element of offering an incentive is not that strong as far as government-run projects are concerned. But when it comes to private investors, the bond offered needs to offer an incentive to the private investor. The bond offerer needs, in this case, we are considering the government, needs to offer an incentive to the private investor. The discount on buying price is that kind of incentive. It marks that kind of incentive. So यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं इसकी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की, एक चीज़ ये नोटिस कीजिएगा कि ये सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें हम लोग ये डिस्काउंट्स वगैरह एज एन इंसेंटिव फॉर एन इन्वेस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पैसे इकट्ठे किए जा सकें हुकूमत अपना खर्चा चलाने के लिए. लेकिन बहुत से हुकूमत के प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, स्पेशली सोशल सेक्टर के फलाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कि उसमें इस तरह की कैलकुलेशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप इनकम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे मकसद इनकम नहीं है, मकसद उसके प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इन्वेस्टमेंट्स, दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके दरमियान कोई एक कंपैरिजन नहीं है, उसके दरमियान कोई एक तकाबली जायज़ा नहीं है. नहीं, जब इस तरह के सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूँ, यहाँ पे पूरा एक मिनिस्ट्री है ज़कात की, ज़कात और उशर की एक डिवीज़न है. तो ये चीज़ें जो है ज़कात और उशर जो होती हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती कि शरअ सूद के हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. क्या ये उसका फिर जायज़ा लिया जाएगा कि अच्छा ये ज़कात का जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं
या ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इससे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है. इट्स नॉट अबाउट रिटर्न्स. ये एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है कि, और हर माशरे में होता है, चाहे वो इस्लामी हो चाहे ना हो. बाहर ममालिक में बहुत से जो हम लोग रहे वो कोई इस्लामी माशरे नहीं थे, लेकिन वहाँ पे देखें ये सारे उनके इसी तरह के प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, फूड स्टैम्प्स हैं, कैश रिफंड्स हैं, कैश असिस्टेंस है. ये सारे इसी तरह के ज़कात और उशर वगैरह के प्रोग्राम होते हैं. इनमें ये चीज़ें जो होती है, इन्वेस्टर को देखना कि जी, और फिर प्रोजेक्ट को देखना कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है और उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इसको किससे कंपेयर करें, ये चीज़ें जो होती है बेमायनी हो जाती हैं. बिकॉज फॉर अ सोशल कॉज you don't need these kinds of investments. You just need to go ahead with it and see, and perhaps in certain aspects you would need to calculate the, as far as expenditures are concerned, you need to perhaps come up with these kind of values. But normally in these kind of projects which are related to welfare enhancement or social welfare enhancement, you don't need these kind of calculations. So again, make the differentiation between these. Now bond sale, you do need an incentive, you do need to calculate an IRR in order to attract an investor, but in others you don't need to. These kind of projects like zakat and ushur and income support programs, no, there is no need to do that. The next step is finding the internal rate of return, which will make the future income stream near zero. Just like above, tinker with the percentages or the interest rates. जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में किया कि अब हमने वो परसेंटेज देखनी है कि जिससे वो जो इनकम, फ्यूचर इनकम स्ट्रीम है, वो सिफर के करीब आ जाए. It turns out that the rate at which the future income stream nears zero is 12.8%. And this 12.8% is our internal rate of return, and it is the rate which the investor will use to compare with other investments to see whether it is worthwhile to go ahead with buying bonds. In case of bond, this IRR is also known as yield to maturity. अब देखें इन्वेस्टर क्या यूज कर रहा है. इन्वेस्टर ने पूरी कैलकुलेशन की है, उसमें IRR भी उसने निकाला है. IRR जो निकाला है जिससे उसकी फ्यूचर इनकम स्ट्रीम जो होती है वो तकरीबन सिफर के करीब आ गई, जैसा कि हमने ऊपर की मिसालों में भी किया था. वो आई है 12.8%. तो 12.8% जो है वो उसके लिए एक मार्क है कि जिससे वो और इन्वेस्टमेंट्स देखेगा कि इससे क्या ऑफर किया जा रहा है, क्या फीजिबल है क्या नहीं है. अब देखें जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर हो रही है वो क्या है, वो 10% है, लेकिन जो 12.8% जो इन्वेस्टर कह रहा है कि जी 12.8% होनी चाहिए ताकि मेरे लिए ये एक बड़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाए. अब इन्वेस्टर ये करेगा कि उस 12.8% पे देखेगा कि और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अलावा मेरे पास जो ऑप्शन है तो उसमें क्या वो अच्छी बनती है कि नहीं बनती. उसके मुकाबले में ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसमें भी वो ये कैलकुलेट करेगा. फिर वो देखेगा कि इन दोनों के दरमियान, दो प्रोजेक्ट्स के दरमियान, दो इन्वेस्टमेंट्स के दरमियान, बॉन्ड्स की या कोई और होगी, उनके जो दो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उनमें से कौन सी अच्छी है. उसकी बेस पे वो ये डिसीजन करेगा. he or she will decide whether to go ahead and buy bonds or not. So that is the end of the lecture, this one. I'm sure it's it's getting a bit more challenging than before. We are doing the calculations and we are going into the technical stuff, but that is the beauty of it. You have to go through this stuff, you have to learn this stuff in order to be able to analyze projects and be part of project analysis. So in this lecture we went through some of the practical examples. One of them was hypothetical example, and then one of them was a real world example of discount bonds. And we went through all the steps. First calculating the nominal profits, then the present value adjusted profits and expenditures, then we went to the IRR and how decisions are made based on IRR in both the cases. So hopefully you had a good time. Take some rest now, because I'm sure you'd have it's a bit more challenging to you. So take some time, go out, have listen to some music or something, relax, and then be back for the next lecture where we'll be doing similar kind of stuff. So hopefully I'll see you next time. Take care. Allah Hafiz.